Hello everyone, welcome to UGC Net Law PYQ series. In this series, we will discuss about previous year question paper, and in this video, we will discuss June 2019 attempt. So let's begin. First question is, test of control deals with. इसका आंसर है master and servant relationship. Next, in which of the following cases the Supreme Court held that the audit altrum patrum rule in essence enforces the equality clause in Article 14 and is applicable not only to the quasi-judicial bodies but also to the administrative order adversely affecting the parties in question? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस डीटीसी मजदूर यूनियन. एंड जो जितना भी आगे आप स्लाइड्स में देखेंगे जो रेड में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन पेपर में नहीं था बट मैंने मेंशन किया है. तो जो केस लॉज हैं उनके ना ईयर याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिए हैं. तो जितना भी रेड के अंदर है वो भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. Next is the Sustainable Development Goals committed to provide universal access to affordable, reliable, and modern energy services. Yes. Improving the shares of renewable energy. Yes. Doubling of energy efficiency by 2030. Yes. Protection of oceans and wetland. No. तो इसका आंसर बनेगा A, B and C. That is first. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. पहली बात तो हम पहले ध्यान रखेंगे कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि दोनों पैटर्न्स पे ये क्वेश्चन आता है. फर्स्ट स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म रिबेलियन was inserted by the Constitutional 42nd Amendment Act 1976. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो 42nd अमेंडमेंट है ना, ये 42nd अमेंडमेंट में नहीं, ये 44th अमेंडमेंट में हुआ था. और जो आर्म रिबेलियन है उसके पहले वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको रिमूव करके आर्म रिबेलियन वर्ड आया था. नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अंडर क्लॉज 1 आर्टिकल 352 अनलेस डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट इज कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग. इट्स करेक्ट. Third point है a resolution approving the proclamation of national emergency must be passed by special authority. It's also correct. Fourth point, a proclamation of emergency once approved by the parliament shall remain in force until the emergency ceases. नहीं, ये पार्ट गलत है स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि ये जो रिमेन इन फोर्स है वो अप टू 6 months है, नॉट अंटिल द इमरजेंसी सीजेस. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. तो अपने पास आंसर जो है वो पॉइंट बी है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है if the other house does not pass an ordinary bill and more than 6 months have passed, the president may summon a joint session of both the houses. It is correct. B है at the joint session of two houses, new amendment can be proposed in a bill with the permission of presiding officer, speaker of the Lok Sabha. No, it is wrong. किसी भी joint session के अंदर कोई new amendment इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. यह आर्टिकल 107 के अंदर लिखा है. सी है द लोअर हाउसेस हैज एक्सक्लूसिव पावर ओवर मनी बिल. करेक्ट. ये आर्टिकल 109 एंड 110 में लिखा हुआ है. मनी एंड फाइनेंशियल बिल कैन be only introduced in the Lok Sabha and with the prior recommendation of the president. It is correct. तो अपना ऑप्शन है, आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ए, सी एंड डी. Next question is right to environment discourse include right to health, yes. Right to sanitation, yes. Right to clean technology, yes. Right to freedom of speech इसमें नहीं आता, right to environment में नहीं आता. तो इसका आंसर बनेगा हमारा A, B and C. That is option number 8. Next question is every offence punishable under section 147 of Negotiable Instruments Act 1881 is compoundable. Option number A. UN Commissioner of Human Rights is appointed by Secretary General. Option number C. Next question is which of the following is correct. अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई एक स्टेटमेंट ही करेक्ट हो सकता है. First statement is administrative law is a branch of public law and is only a part of constitutional law.
It cannot control the constitutional law. It is correct. Next question is, who among the following has defined the jurisprudence as the knowledge of things divine and human, the science of right and wrong? It is answer number D, Ulpian. Next is, we have to evolve new principles and lay down new norms which will adequately deal with new problems which arise in highly industrialized society, was laid down in MC Mehta versus Union of India. Next question is, in which of the following case it was held that if a person is not a citizen of any state, he will be called stateless? It was held in Stoke versus the Public Trustee. नोटबॉन्ड केस जो है वो नेशनैलिटी का है, 1955 में आया था. विकर वर्सेस ह्यूमन जो है वो डोमिसाइल का है, एंड विनांस वर्सेस एजी है वो भी डोमिसाइल्स का है. विकर वर्सेस ह्यूमन है जो वो 1858 में आया था, एंड विनहांस वर्सेस एजी जो है 1904 में आया था. Next question is, the communication of an acceptance is complete as against the proposer. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द एक्सेप्टर्स पावर. ये सेक्शन नंबर 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है, बात हुई है इसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट माइनर्स ओनली. ऑप्शन नंबर बी, ये लेस्ली वर्सेस शील में कहा गया था ये स्टेटमेंट. Next question is, in which of the section of the Partnership Act it is laid down that there can be a partnership in a single or particular business venture? It is section number 8. Section 9 जो है वो बात करता है जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स. सेक्शन 10 जो है वो बात करता है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड. सेक्शन 11 जो है वो बात करता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. Next question is, possession through an agent or a servant is an example of mediate possession. Next question is, cyber security according to IT Act 2000 means protecting information, equipment, device, computer resources, communication device and information stored therein from the unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification or destruction. Next question is, match the following. First, the date and year of establishment of United Nations, 24th October 1945. The first Security Council came into being 12th January 1946. Paris Declaration on Sanction against South Africa, 2nd May 1981. The Boutros took over as Secretary General of UN, 1st January 1992. तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी. Next question is, which of the following is not the school of Muslim law? That is Zaida. Next, public health, sanitation, conservancy and solid waste management is inserted in the schedule of the constitution by which of the following constitutional amendment? That is 74th constitutional amendment. ये 12th schedule में mention है. Next is, in which of the following cases did the Supreme Court hold that a relationship is a nature of marriage? Under the Domestic Violence Act 2005 must also fulfill some basic criteria. Merely spending weekends together or one night would not make it a domestic relationship. It is option number B, D, Veduswamy versus D, Pachaman. Next question is, duel may be regarded as consideration for cannibal intercourse by way of analog to the contract for sale. The above observation has been made in which of the following cases? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा. ये 1886 में आया था. जोबिर अहमद केस जो है वो 1959 में आया था. रुहाना खातून केस जो है वो 1942 में आया था. हामिद दुनिसा बीबी केस जो है वो 1890 में आया था. जितने भी केसेस हैं उनके ईयर पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो केसेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, इसलिए ईयर का पता होना बहुत जरूरी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इट्स स्ट्रिक्ट एंड टेक्निकल सेंस इज अप्लाइड इन यूएसए. ऑप्शन नंबर सी. Question is, the Cyber Regulation Appellate Tribunal Rule 2000 has been passed under which section of the IT Act 2000? It is section 87.
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। जो लिस्ट 1 है उसमें जूरिस्ट के नेम गिवन है और लिस्ट 2 के अंदर उनके स्कूल्स के। तो अब देखते हैं, जैसे जो बेंथम है वो बिलोंग करते हैं एनालिटिकल स्कूल से, पुचटा जो है वो बिलोंग करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल से, हर्बर्ट जो है वो बिलोंग करते हैं सोशोलॉजिकल स्कूल से, और जो ग्रे है वो बिलोंग करते हैं रियलिस्टिक स्कूल से। तो जो हमारा ऑप्शन है, जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is, in which of the following cases the Supreme Court said that the governor cannot exercise his power of suspension of the sentence under Article 213 of the Constitution of India for the period when the Supreme Court is seized of the case? The order of the governor could only be operate until the matter becomes sub judice in the Supreme Court, and it becomes on the filing of the petition for the special leave to appeal. It is option number C, KM Narvati versus State of Bombay. Next question is, Super Cassette Industry Limited versus MySpace Inc. 2011 is the leading case on Copyright Act 1957 dealing with this section of the Act. It's option number D, section 51. सेक्शन 14 जो है वो बात करता है मीनिंग ऑफ द कॉपीराइट की। सेक्शन 22 जो है वो बात करता है टर्म्स ऑफ कॉपीराइट इन पब्लिश्ड लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। एंड सेक्शन 30 जो है वो बात करता है लाइसेंस बाय ओनर्स ऑफ कॉपीराइट। Next question is, the remedy for the violation of Section 3 and Section 4 of Companies Act has been laid down under सेक्शन नंबर 27, ऑप्शन बी। सेक्शन 3 जो है ना वो बोलता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के बारे में। सेक्शन 4 जो है वो बात करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की। सेक्शन 26 जो है वो बात करता है प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 19। सेक्शन 42 ए जो है वो बात करता है कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर्स बाय कमीशन। सेक्शन 43 ए जो है वो बात करता है पावर टू इम्पोज पेनल्टी। Next question is, the accused at the time of committing the act because of unsoundness of mind is incapable of knowing nature of the act, that the act is wrong or contrary to law, that the act is unethical and wrong, the act is morally wrong but not contrary to the law. To claim the benefits of section 84 of the IPC, which of the above needs to be proved? सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी जो है वो बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एंड इसका आंसर जो होगा वो ए एंड बी ये दोनों करेक्ट है, सी जो है वो गलत है एंड डी भी गलत है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो हमारा नया एक्ट आया है द भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके अंदर जो सेक्शन नंबर 22 है वो बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। Next question is, which of the following is not a constituent of tort? It is option number D, mens rea. Next, X, with the intention to cause miscarriage, administered a drug to a pregnant lady. Y, the child in the womb died. X is guilty of causing a miscarriage. Question is, Holbrook Hotel Limited versus Scarborough Borough Council is a leading case on nuisance. Option number B. Next, decision-making process of those authorities, beside being transparent, must result in a seasoned conclusion, which is reflective of a due application of mind to the diverse concern arising from the project, such as the present. This has been observed regarding environment impact assessment law in which of the following cases? It is Gram Panchayat Navlak Umar versus Union of India, option number C. Next question is, match the following. A right which, although recognized by law, is not enforceable. It is imperfect right. A person's right in relation to his property is proprietary right. A person's right relating to the status and that arising out of contract is a personal right. A right which does not create an intermediate interest is contingent right. तो इसका जो ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which article of the Indian Constitution states that the state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India? It is Article 44 of the Constitution, which is option number C.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट है, ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है, वो बताना है इस क्वेश्चन के अंदर. फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 16 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एवरीवन हैज द राइट टू सीक एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फॉर फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. भाई ये गलत है. ऐसे तो कोई भी क्रिमिनल है वो बच जाएगा, किसी भी कंट्री में जाके छुप सकता है प्रोसिक्यूशन से, सजा लेने से. तो ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीटली रॉन्ग है. सेकंड, in 1967 United Nations Declaration on the Territorial Asylum was unanimously adopted by the General Assembly. एकदम करेक्ट है ये. C, the Convention on the Status of the Refugee 1951 entered into the force on April 24, 1956. ये गलत है, यहाँ पे 1957 होगा. तो हमें ईयर वगैरह हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि डेट ईयर कुछ भी गलत हो सकता है स्टेटमेंट के अंदर, तो हमें ये भी पता होना चाहिए. डी, in the asylum case Colombia versus Peru, the International Court of Justice explained the distinction between territorial asylum and the diplomatic asylum. ये एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है. तो हमारा आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन. ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन. Next question is which of the following statement is are correct? The operation of doctrine of forum prorogation has not been investigated under UN Charter or Statute of International Court of Justice. It's correct. The doctrine of forum prorogatum may not operate where the court already has jurisdiction rationale personam. Wrong, ये गलत है statement. The doctrine of forum prorogatum affords an informal way for a state to express consent to the jurisdiction of court. Correct. Fourth point, the principle underlying doctrine of forum prorogatum was enunciated by Permanent Court of International Justice in the island of Palmas case 1928. नहीं, गलत है, ये कोरफू चैनल केस के अंदर आया था. तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, आंसर बनेगा, वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा. Next question is, a citizen has a fundamental right to use the best means of imparting and receiving information, and as such to have an access to a telecasting for the purpose. Is the observation of the Supreme Court, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India versus Cricket Association of Bengal 1995 का केस है. Next question is, under which of the following sections of the Code of Civil Procedure did the Indian Code recognize or de-recognize the foreign degree of divorce? It is section 13. Section 12 जो है वो बात करता है bar to the further suits. Section 15 जो है वो बात करता है court of competent which is jurisdiction जिसे हम कहते हैं. Section 16 जो है वो बात करता है territorial jurisdiction की. Next question है Bear Corporation versus Union of India 2011 case is dealing on which subject matter? It is option number C, working of patenting process. Next question is which one of the following is not a principle which is the very foundation of international humanitarian law and which must guide emergency humanitarian actions in armed conflicts? It is option number D, principle of self-determination. Next question is, the institution of ombudsman was firstly initiated in the year 1809 by Sweden. Option number D. Next question is, which of the following is a leading case on trespass ab initio? It's option number D, 6 Carpenter's case. गोल्डस्मिथ केस जो है वो डिफामेशन के ऊपर है. डम्बल वर्सेस रॉबर्ट जो है वो अरेस्ट के ऊपर है. ये सस्पिशियस जो है वो काफी है अरेस्ट करने के लिए, कि भाई शक होना ही काफी है अरेस्ट करने के लिए. बर्ड वर्सेस जोन्स जो है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ऊपर है. Next question is, a statutory board conducting examinations is not a service provider and does not offer service to the candidates while conducting examinations. Was held by the Supreme Court in option number B, Bihar School Examination Board versus Suresh Prasad Sinha 2009. Next question is, how many core principles are laid down in United Nations Declaration of Permanent Sovereignty over Natural Resources? It's option number D, 8 core principles. एक बार पढ़ लेना ताकि रेफरेंस आ जाए. कई बार प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि भाई क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, करेक्ट नॉट करेक्ट, उस वाले क्वेश्चंस में भी आ जाता है, तो एक बार प्रिंसिपल्स देख लेना.
Next question is, if one's artistic expressions are synonymous with one's personality, then they are deserving of protection just as much as the physical person. The above observation is true about which theory of intellectual property? It's option number B, personality theory. Next question is, which of the following sections of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deals with the rights of adoptive parents to dispose of their property? It's option number C, section 13. सेक्शन 11 जो है वो बात करता है अदर कंडीशंस ऑफ वैलिड एडॉप्शन. 12 जो है वो बात करता है इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन. जो सेक्शन 14 है वो बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट हैज बीन हेल्ड दैट सेक्शन 9 of Civil Procedure Code 1973, which enables a civil court to try all the suits of civil nature, impliedly confers jurisdiction to apply the law of torts as principle of justice, equity, and good conscience. It's option number A, Union Carbide Corporation versus Union of India. Next question is match the following. Fighting by two or more persons in public place is AFRI. Section 159 according to IPC and according to Bharatiya Nyaya Sanhita, section 194. International aiding in commission of an offence. इसका आंसर होगा abatement. Section 107 according to IPC and Section 45 according to Bharatiya Nyaya Sanhita. Violence is caused by five or more persons. Its right. Section 146 according to IPC and Section 191 according to Bharatiya Nyaya Sanhita. Offence committed against state by word, sign or visible representation is sedition. Section 124A and section 152 according to Bharatiya Nyaya Sanhita, which states act endangering sovereignty, unity and integrity of India. तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. Next question is, uninsured vehicles are also within the scope of section 165 of Motor Vehicles Act was held in option number C, Parmanand Thakur versus Commissioner Coal Mines 1988. Next, in which of the following cases Supreme Court said that the fundamental rights and directive principles aim at the same goal of bringing about a social revolution and establishment of welfare state, and they can interpreted it and applied together, and they are supplementary and complementary to each other? It's option number D, Keshwanand Bharti versus State of Kerala. Next question is, which one of the following is not correct? इसके अंदर हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट बताना है जो कि गलत है. स्टेटमेंट ए, जुडिशियल रिव्यू ट्रेंड्स टू इवैल्यूएट द जुडिशरी टू रैंक्स ऑफ द सुपर legislature. Correct. The scope of judicial review is limited as it emphasizes on the procedure established by law rather than due to the procedure of law. Correct. Judicial review is indissoluble to a federal system of the government. Correct. Judicial review does not include judicial competence to review executive enforcement of legislative enactments. ये गलत है, ये include करता है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट of International Court of Justice list international convention whether general or particular establishing rules expressly recognized by the contesting states as the first source of international law. इसका reason, in modern period international treaties are the most important source of international law. ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और जो रीजन है वो भी assertion का करेक्ट रीजन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन इन मर्ज इल मौत? इसका मतलब है डेड बेड. इस वर्ड मर्ज इल मौत का मतलब ही डेड बेड है. इसके ऑप्शंस है, अ मैलेडी विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर पेशेंट टू मूव, इट मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर मोर देन अ ईयर, there must be apprehension of death, a malady which causes problem with heart. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. Next question is, international humanitarian law is the law that regulates the conduct of war.
It is that branch of international law which seeks to limit the efforts of armed conflicts by protecting persons who are not participating in the hostilities and by restricting and regulating the means and methods of warfare available to the combatants. Reason: international humanitarian law is inspired by consideration of humanity and the mitigation of the human sufferings. जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, दोनों स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. Next question is, the preamble to agreement on trade related aspects of intellectual property rights lays down public policy objectives of international system, special needs of the least developed countries, resolving IP disputes through multi-layered procedures, establishing mutual supportive relationship between WTO and WIPO. So the answer for this question is option number D, because all the points are correct. Next question is, the NGT Act 2010 contains how many schedules? It's option number 3, 3. Next question is, McLeod's Pharmaceuticals Limited versus Tidal Laboratories Private Limited is a case on which subject of intellectual property rights? It's on trademark, option number. Next question is, a legal person is any subject matter other than a human being to which law attributes personality, is the statement of Salmon, option number B. Next question is, regulation of access to biological diversity is described under which one of the following chapters of Biological Diversity Act 2002? It's option number B, chapter number 2. Next question is, in which one of the following cases the Supreme Court held that the federalism in India is not a matter of administrative conveyance but one of principle? Is option number A, S.R. Bommai versus Union of India 1994. Next, in which year the Commission on Statutes of Women was established by Economic and Social Council? In 1946, option number A. Question is, Chandra versus Suresh deals with? It's option number D, degree of judicial separation. Next, a servant collected money from the debtor of his master as authorized by him. The servant retained the money because it was due to him as wages. He committed, option number A, criminal breach of trust. सेक्शन 405 आईपीसी का है एंड सेक्शन 316 इज अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता. थेफ्ट के लिए जो सेक्शन 378 जो कि आईपीसी में है एंड सेक्शन 303 फॉर भारतीय न्याय संहिता. क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के लिए सेक्शन 403 इन आईपीसी एंड सेक्शन 314 इन भारतीय न्याय संहिता एक्ट. नेक्स्ट, in which of the following cases did the Supreme Court of India strike down section 303 IPC as unconstitutional? It's Mithu Kaur versus State of Punjab. Next, the law of every modern state shows at 1,000 points the influence of both the accepted social morality and wider moral ideas. These influence enter into law either abruptly or avoidly through legislation or silently and piecemeal through the judicial process. Who said this? Hart. Next, which of the following statements are correct? इसमें वही चीज हमें ध्यान रखनी कि क्या करेक्ट है, मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है. फर्स्ट पॉइंट, Hegel is one of the chief exponents of the consecutive theory of recognition. एकदम सही. Civil Air Transport Incorporated Company versus Central Air Transport Corporation is a leading case on the retrospective effect of recognition. Correct. De jure recognition is not final and can be withdrawn. Wrong. ये final है, ये de facto है actually. In Luther versus Saga, it was held that there is distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to the internal acts of recognition. एकदम सही. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. A wife has implied authority of her husband to buy articles of household necessity. If the wife is living with her husband in a domestic establishment of their own,
if the wife is living separately, if the wife is living with her husband, not in a domestic establishment, if the wife is provided a reasonable allowance by the husband for the purchase of household need. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेडिशन मीन्स. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू हेट्रेड थ्रू वर्ड, साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन. आईपीसी के अंदर सेक्शन 124 ए में डिफाइंड है एंड सेक्शन 152 जो है एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है इंडिया, ये भारतीय न्याय संहिता में डिफाइंड है. नेक्स्ट, which one of the following is not essential for the parliamentary form of government? The presence of nominal executive head of the state who acts exclusively on the advice of the cabinet. The cabinet, which is the real executive, consists of leaders of a party who have the support of the majority in the legislature. The responsibility of the cabinet is collective. The president appoints minister and assigns to them टू देयर ऑफिस. नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं बट असाइन नहीं करते उनको ऑफिस से, तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेक्शन नंबर 135. नेक्स्ट, acts with the intention to steal ornaments opened vice box and found it empty. Which of the following statements is correct? X is not liable for attempt to commit theft as the box being empty. Commission of theft was impossible. No. X is not liable for attempt to commit theft as he did not do the preliminary act towards the commission of theft. No. X is not guilty of attempt to commit theft as the ornaments were not in the box. नहीं. X is the guilty of attempt to commit theft as he had the intention to commit the theft and did an act towards its commission. Correct. Section 511, illustration A. Next, the Constitution of India incorporates the rule of law in Article 14. Next question is, which article of the UN Charter puts the promotion of the respects for human rights on the same level as the maintenance of the international peace and security as the purpose of UN? Article 1. Next, which of the following articles of Universal Declaration of Human Rights 1948 deals with civil and political rights? From Article 3 to Article 21. Next question. Under the Indian Constitution, an amendment bill passed by both the Houses of Parliament by required majority shall be presented to the President, who shall give his assent, and thereupon the Constitution shall stand amended. Reason: the President is bound to give his assent to the bill. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और जो रीजन है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसका है SC एसोसिएट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. इंद्रे विनय चंद्र मिश्रा. Original jurisdiction, State of Karnataka versus Union of India. Power of Supreme Court to withdraw and transfer cases. AR Anuthalya versus SR Nayak. तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए. Next question is, the liability has been defined as the bond of necessity that exists between wrongdoer and the remedy of the wrong. It's given by Salmon. Next question is, which of the following actions can be taken when an issue is made under the provisions of Section 42 of the Companies Act 2013? It's the offer can be made to a maximum of 50 people. Next question is, the Sependa relationship on the line of assent under Hindu law extent. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री थ्रू फादर एंड द 3 डिग्री थ्रू द मदर. ये सेक्शन 3F1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइंड है.
Next question is, which of the following provisions of Indian Constitution have been extended to Jammu and Kashmir state by presidential order? ये 2019 का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर उस हिसाब से आंसर करेंगे, बट एट प्रेजेंट ये सारी चीजें जो है, सारे पॉइंट्स हैं वो वैलिड हैं। पहले अपन पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स सर्विस एंड सिटीजनशिप, provisions relating to the economics, provisions relating to the finance under Article 360 of the Constitution, power of high courts to issue writs for any other purpose। चारों ही वैलिड हैं, क्योंकि अब अमेंडमेंट हो गया है, चेंजेस हो गए हैं, तो इसलिए चारों वैलिड होंगे। बट 2019 के हिसाब से देखें तो ए और बी ही करेक्ट है, बट अब एट प्रेजेंट चारों ही आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आज के हिसाब से। Next question is, the prohibition of registration of geographical indication under GI Act 1999 contains as many as 7 grounds। Section number 9 में mention है ये। Next question, which of the following statements correctly reflects the cardinal principle actus non factum mens sit rea? Mens rea is an essential element of crime, and there cannot be a crime without mens rea। Criminal liability under Indian law always implies mens rea। To constitute crime, there must be actus reus and mens rea। Actus reus is not allowed necessarily to constitute a crime। इसका आंसर सी होगा, पॉइंट नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, बट कुछ केसेस के अंदर मेंस रिया रिक्वायर्ड नहीं होता, तो हम हमेशा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे। जब अपन यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करेंगे तो हमेशा से ये बात ध्यान रखना कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ना, वही करेक्ट आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है पॉइंट सी। Next question is, which of the following statements are correct? WTO was established as the result of culmination of Urugiri round of GATT. New World Trade Organization came into effect on January 1, 1995. At the time of the establishment, WTO had 88 members. Wrong. एक तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कौन से टाइम की बात हो रही है, कौन से एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है WTO के, पुराने वाले या नए वाले। पुराने वाले में टोटल 23 मेंबर्स थे जो 1943 में आया था, और जो नया वाला था जो 1995 में आया था उसमें टोटल 128 मेंबर्स थे, तो ये वाला पॉइंट गलत है। लास्ट, द 7th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO वाज हेल्ड इन मैराकेश फ्रॉम 30th November to December 2008, जबकि 2009 है यहाँ पे, 2008 में नहीं है, 2009 में हुआ था। तो अपना सी और डी गलत है, ए और बी करेक्ट है, इसके करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in India, the machinery of government is essentially British, and the whole collection of British constitutional convention has apparently been incorporated as conventions, is observation of Sir Aver। Next, which of the following are the chief exponents of the theory of consent regarding basis of international law? Is ancillary triple opinion। Next question is, which section of Indian Penal Code deals with solitary confinement? It's option number A, section 73, and section 11 in Bharatiya Nyaya Samhita। Next question is, which of the following articles provide coverage for the intervention in domestic jurisdiction for the enforcement of human rights? Is Article 2, subclause 7 of UN Charter। Next question is, the absolute grounds for refusal of registration is contained under which section of Trademark Act 1999? It's section 9। section 7 जो है वो बात करता है classification of goods and services। section 8 जो है वो बात करता है publication, and section 10 है जो बात करता है limitation as to colors। Next question is, in which of the following cases the court held that divorce is good in the law through bad in the theology? It's Sarabhai case। Next question is, whoever counterfeits or knowingly perform any part of process of counterfeiting Indian coins under section 232 of IPC shall be punished with
ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रिजनमेंट विद मे एक्सटेंड टू 10 years एंड फाइन। जो काउंटरफीटिंग है वो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 178 में बात करता है और उसके पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 10 years एंड फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच one of the following jurist is not related to historical school? It's option number B, Alric. Next question is, judges do not make law but only declare what has always been law. This statement is given by Allen. Next, a Hindu contracting second marriage during pendency of appeal against degree of divorce is factum valid. Next question is, I think adherence to precedent should be the rule, not the exception. This statement is given by Blackstone. Next and the last question of this video is, judicial review of an administrative action means review by the judiciary. Thank you so much for watching. आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। और जब भी यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो उससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना ज्यादा सही रहता है, बिकॉज वो बहुत हेल्प करते हैं और काफी टाइम बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो डू वॉच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।